Jagadev students, welcome once again in the economics class. Students, today we will study the chapter collection of data. Collection of data, you all know, student, that this is the first stage in the process of data collection. That is when we want to collect the information through statistics. That is, we want to collect the information of any problem. The first stage is the collection of data. Collection of data, you all know that there are different modes of collection of data. That is direct personal investigation, indirect oral investigation, collection of information through local respondents, and also enumerators method. Under enumerators method, you have studied that mailing method and the questionnaire method. Mailing method, you know, when you make the questionnaire and you can mail the person, and then the person will be giving the answers in the mail only. So student, these are all the methods of collecting primary data. You have studied now that there are two types of data, primary data and the secondary data. Primary data, you all know that this is the first time study that when we are collecting the information from the source of origin, that is directly with the person, it is known as primary data. And in primary data, you have studied the different methods to collect the information. So under enumerator methods, you have to prepare the questionnaire. Questionnaire, you know that it is having a set of questions, and you have to answer the questions either orally or either in the written form. So there are some qualities of a questionnaire. That is, when you want to prepare a question, whenever you want to came in an idea in your mind that you have to make a questionnaire, but before preparing the questionnaire, there must be some requisites for preparing the question. या questionnaire में कुछ qualities होनी चाहिए. That is, if you want to prepare a questionnaire must be having some qualities. Now, what are the qualities of preparing a questionnaire? So the qualities are, a good questionnaire must have the following qualities, like limited number of question. Yes, when you want to make a questionnaire, जब आप कोई क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं या कोई किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, you have to make some questions या set of questions. So the first thing came in your mind that the questionnaire must be limited number of will be there. That is, it is not that you are asking so many questions. The question will be to the point, related to the study, related to the information, and there are limited number of questions are there, जिसमें कि हम उन क्वेश्चनर्स में पूरी इंफॉर्मेशन जो हमें कलेक्ट करनी है वो हम उस क्वेश्चंस के अंदर आ जाए. नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी. यस, क्वेश्चनर मस्ट बी सिंपल. It should not be very much complicated. That ki when we have want to collect the information, so the person is not able to understand the question. So the simplicity will be there. The questionnaire we are preparing should be simple one and easy to understand. Next is the proper order of the question. जब भी आप कोई क्वेश्चनर बनाएंगे या क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे, तो इट मस्ट बी kept in mind that देयर मस्ट बी ऑर्डर. क्वेश्चनर मस्ट बी इन ऑर्डर. लाइक if you are asking question number 1, then 2, then 3, 4, means sequence must be there. You have to follow the order. ऐसा नहीं कि पहले आपने question number 1 लिख दिया, then उसके बाद you are asking question number 10, then you are asking question number 5. No, the questionnaire must be in proper order. Next is the no undesirable question. When you are preparing the questionnaire, you just keep in mind that the questionnaire must be related to the information. Don't ask any undesirable question or the questions which are not related to the study. जो questions जो आप information collect कर रहे हैं, आपको वो questions उसी से related होना चाहिए. So no undesirable question can be asked. Calculation. You have to prepare a questionnaire like that कि it must not be having too much calculated questions. क्वेश्चनर ऐसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो कि इजीली समझ में आ जाए. बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस यू कांट आस्क. यू डोंट आस्क सच क्वेश्चंस व्हिच नीड रिक्वायर्ड टाइम एंड कैलकुलेशन शुड बी देयर. नेक्स्ट इज प्री टेस्टिंग ऑफ द और द पायलट सर्वे. प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे, you know student, that it is very important that you should do the pilot survey. Pilot survey means when you are preparing the questionnaire for study, for asking questions, so asking information from somebody. So before implementing the questionnaire, before using the questionnaire, you have to make a pilot survey. Pilot survey is known as the pre-testing of the questionnaire. जैसे like आप देखिए एग्जाम्स में आप जब को आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर आपको जैसे ही मिलता है आप उसको रीड करते हैं, तो इट डजंट हैव मच मिस्टेक्स. दैट मीन्स थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है, लेकिन उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती. क्यों? बिकॉज बिफोर
printing the questionnaire, before coming to the questionnaire to you, उसकी प्री टेस्टिंग होती है. मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाते समय या क्वेश्चनर बनाते समय आप जब उसको यूज करते हैं तो उसको यूज करने से पहले एक बार आप उसको चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई ऑर्डर गलत तो नहीं हो गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या वॉट एवर. So any kind of mistake you can find out before using the questionnaire. This is known as pilot survey. So whenever you are giving questionnaire to anybody, or whenever you are using the questionnaire for asking information, before the information collection, you have to make a pilot survey. आपको एक उसकी क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड करना चाहिए, एक बार उसको प्री टेस्ट कर लेना चाहिए कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है. So to avoid the mistake, to avoid any kind of problem or any kind of means like if you confusion, it doesn't create any confusion, so you need to make a pilot survey. So pilot survey is very much important. Before doing anything you have to make a pre testing, और उसी को ही पायलट सर्वे कहा जाता है. तो क्वेश्चन पेपर में भी प्री टेस्टिंग या पायलट सर्वे होना जरूरी है. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन. यस, whenever you are getting some questionnaire, so previously you have to give some instruction that how the answer should be given. That means instruction is needed कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, आंसर कैसे देने हैं. इट मे बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इट मे बी इन शॉर्ट आंसर फॉर्म, इट मे बी इन लॉन्ग आंसर फॉर्म, और इट मे बी वॉट एवर इंस्ट्रक्शन यू वांट टू गिव. सो इंस्ट्रक्शन शुड ऑल्सो always be there in the questionnaire. Next is cross verification. If you are preparing the questionnaire will be such that it must have some cross verification question. आपको क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करने चाहिए कि उससे क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सके. मीन्स यू आर whenever you are putting some problem, you are taking the information of any problem, तो उस प्रॉब्लम को आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए you need some क्रॉस वेरीफाइड क्वेश्चन. तो क्वेश्चनर में क्रॉस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए. नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न. यस, this is very important कि whenever you are giving questionnaire, you are preparing the questionnaire, it must be kept in mind that a point should be given that return of the questionnaire, that is request for return. After completing the questionnaire, after completing the questions, you have to return the questionnaire. Means you can make the first you complete the questionnaire and then you can return back to the questionnaire to the person who has given the questionnaire. दैट मीन्स द इन्यूमरेटर जो जिसने आपको क्वेश्चन पेपर दिया है, क्वेश्चनर दिया है, उसको कंप्लीट करने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग यू हैव टू गिव रिटर्न बैक. आपको सबमिट करना है, वापस करना है. सो दिस इज द क्वालिटीज ऑफ अ क्वेश्चनर. सो स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनर, आप कोई क्वेश्चनर बनाना चाहते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, या जब आप कोई क्वेश्चनर मेथड यूज करना चाहते हैं जिसमें कि आपको कोई डायरेक्टली ओरली आपको क्वेश्चन नहीं पूछने, बल्कि आप एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करें ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्वेश्चन उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर बनाएंगे या क्वेश्चनर बनाएंगे तो फर्स्ट यू नीड टू मेंशन दीज फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर माइंड कि आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है टू मेक द गुड क्वेश्चनर. दैट इज द गुड क्वेश्चनर इज हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सिंप्लिसिटी शुड बी देयर, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का. नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई भी फालतू क्वेश्चंस आपको नहीं रखने उसमें. कैलकुलेशंस, टू मच कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर. प्री टेस्टिंग, जब क्वेश्चनर आपको प्रोवाइड करना है, आपको क्वेश्चनर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उस क्वेश्चनर की पहले प्री टेस्टिंग होना जरूरी है. दैट इज चेकिंग शुड बी डन दैट द क्वेश्चन मस्ट नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स. Proper instruction should be there that how you have to use the questionnaire, and the question must be having some cross verified question. And then after last, that is request for return. After completing the questionnaire you have to give back to the questionnaire, that is you have to return the questionnaire to the person who is collecting information. So student, you can understand what are the good qualities of questionnaire, and also there are different types of questionnaire. The questionnaire may be having multiple choice question, MCQs questions are there, objective questions are there. The questionnaire may be open questions are there. The questionnaire must be having short answers questions or the long answer questions. So there are different types of questions you can make. You have to fill in the questions that you have to make, fill up the blanks, like you are filling some information in the questions. So there are different types of question paper and questionnaire are there. According to the need, according to the type of information you want to collect, you can make the questionnaire, you can prepare the questionnaire. So this is the
method of collecting primary data, that whenever you want to collect the primary data, that is you are collecting information directly from the person. So there are different methods you have to follow, and you have to select one of the method which is suitable for the particular information. And if you want to go through with the questionnaire, so you should make the questionnaire, but you just keep in mind the following things to make the questionnaire, that is these are the qualities of a good questionnaire.